Children, I am solving some questions for your convenience based on equations of motion. Let us start with the first question. A body starts, as you can see on your screen, a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? So, as you all can see, initial velocity is 0.5 meter per second. So, that means what I am given, u is equal to 0.5 meter per second. Now हो क्या रहा है, द वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05. डिक्रीमेंट हो रहा है मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. कितनी, -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप. स्टॉप हो रही है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है. इज दैट क्लियर? And you have to find out the time. So first of all, it's my suggestion, you should write all the three equations of motion. जो तीन equations of motion है, first v is equal to u plus at, second equation s equal to ut plus half at square, and the third equation v square is equal to u square plus 2as. Whenever you are solving any question, write all the three equations on one side of the page and check कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर मैं ये डेटा, ये जितना भी डेटा मेरे को गिवन है, ये यूज़ करती हूँ तो केवल एक अननोन बचता है, बाकी सारे नोन बचते हैं. इफ़ यू विल चेक, यू विल फाइंड आउट दैट इट इज़ ओनली इक्वेशन नंबर 1 which can be used to find out time in this question. So if I apply v is equal to u plus at, v की वैल्यू 0, u 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, एक्सेलरेशन के आगे मैं माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.05. इज दैट क्लियर? और टाइम की वैल्यू t हमें निकालना है. सो इफ आई टेक 0.05 t ऑन LHS, देन इट विल बिकम पॉजिटिव 0.05 t is equal to 0.5. now if you will cross multiply it, you will get t is equal to 10 seconds. Is that clear? This is how you will first write whatever is given in the question. उसके बाद you will write all the three equations of motion on one side of the page and you will check कि using this data कौन सी ऐसी equation है जिसमें अगर हम ये डेटा पुट करते हैं तो केवल एक अननोन बचता है, बाकी सारे नोन होते हैं. तो यूजिंग दैट इक्वेशन, the way I used equation number 1 here, you will find out the unknown data. Is that clear? Coming to the second question, the brakes are applied to a car, produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of motion. तो यहाँ से as soon as I read the first line, what conclusion do I get? Acceleration of 6 meter per second square in the direction opposite to motion. That means क्या हो रहा है, motion के opposite acceleration हो रहा है, यानी कि retardation हो रहा है. 6 meter per sec -6 meter per second square का retardation हो रहा है. Now the car takes 2 seconds. Again from the second line I conclude time taken is 2 seconds to stop. Stop हो गया means v becomes 0. Time, car takes 2 seconds to stop. Calculate the distance it travels during this time. You have to find out the distance traveled. Now we all know s इक्वेशन नंबर सेकेंड में अपीयर होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में. दूसरा s जो आता है, इट कम्स इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. बट नाउ as you can see in both of these equations 2 are unknown. एक तो s तो unknown है ही है, s तो unknown है ही है इन दोनों इक्वेशन में, बट यहाँ पे साथ में u is also appearing which is unknown. That means to find out s using any of these two equations, I should first find out u. That could be found out by using first equation of motion. So
I will first find out u, then after that using any of these two equation I will find out s. Is that clear to you all? So using the first equation of motion, as can be seen here, look here, the solution has been done here. Using the first equation of motion, v is equal to u plus at, putting the value of v as 0, u is unknown, acceleration is minus 6 meter per second square, into time की value 2. Is that clear? This s is for seconds. Is that clear? s जो यहाँ पे इसने लिखा है ये seconds को represent कर रहा है. If you will solve this, you will get the value of u as 12 meter per second. Is that clear? Once you get the value of u, using the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. u आपने अभी ऊपर निकाल ही लिया है 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम की वैल्यू आपके पास 2 सेकेंड्स है ही सही, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है -6 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर. ये s जो है सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, you need not to write the units in the bracket if you don't want to write. Okay, so if you will solve it, you will get the value of s as 12 meter per second. I will solve it for you. Here v is equal to u plus 80 given, देखो डेटा यहाँ पे सारा लिखा हुआ है जो गिवन है. v is equal to u plus 80, v की वैल्यू 0, u हमें निकालना है, a की वैल्यू -6 इंटू टाइम की वैल्यू 2. So if I solve it, u is -12, 0 equal to u minus 12. तो यहाँ से u कितना आ गया 12 meter per second. Once I get u, using second equation of motion s equal to ut plus half a t square. u की वैल्यू, put the value of u as 12, time as 2 plus half, acceleration की वैल्यू -6 and टाइम का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4. इज दैट क्लियर? नाउ इफ यू विल सॉल्व इट, 2 1 2, 2 2 4, सो 12 2 24, माइनस क्यों आ जाएगा? बिकॉज ये जो 6 है इसके आगे एक माइनस है, -12. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल कम आउट टू बी 12 मीटर. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द questions based on equations of motion. Is that clear? Now one more question I am discussing here is based on average speed. Look this question. A motorcyclist drives from A to B with uniform speed of 30 km and returns back with a speed of 20 km per hour. Find its average speed. Okay, so the man, a motorcyclist, he goes from A to B. This is point A to B. While going, the speed is 30 km per hour, and when he is coming back, he is coming at the speed of 20 km per hour. So you have to find out the average speed at which he completed his journey. Now from here, we all know, let the distance between A and B be x. Is that clear? हमने माना A से B तक की डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक है. सो द टाइम टेकन बाय द मोटरसाइक्लिस्ट टू गो फ्रॉम A टू B, लेट इट बी t1. तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस दैट इज x अपॉन स्पीड दैट इज 30. जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी? 30 थी. सिमिलरली टाइम टेकन बाय हिम टू गो फ्रॉम B टू A, t2 माने अगर हम उसको, अगेन डिस्टेंस विल रिमेन सेम दैट इज x अपॉन 20. इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड आउट द टोटल टाइम. जाने का टाइम पता लग गया और वापस आने का टाइम पता लग गया. नाउ बाय एडिंग दीज टू यू विल फाइंड आउट द टोटल टाइम t1 प्लस t2. ठीक है, यू विल, वंस यू गेट द टोटल टाइम, इज दैट क्लियर? वंस यू गेट द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कहाँ से आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस की वैल्यू होगी जाते वक्त की डिस्टेंस x प्लस आते वक्त की डिस्टेंस x. ठीक है, वंस यू गेट द टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला
what will be the formula for average speed? Average speed का formula होगा total distance upon total time. total distance आपकी कितनी है 2x और total time कितना है x upon t1 plus t2, that is x upon 30 plus x upon 20. Now if you will solve it, you can easily get the answer. Is that clear? So here is the solution. As you all can see, can you all see this? Time t1 है x upon 30, t2 है x upon 20. Adding these two time we get 5x upon 60. टोटल डिस्टेंस है 2x, अभी अभी मैंने बताया, और टोटल टाइम इन्होंने यहाँ पे अलग से ऐड करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड इफ़ यू विल सॉल्व इट, सॉल्व कैसे करा है इसको, 2x अपॉन 5x, 60 ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल आउट हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60. सो इट विल कम आउट टू बी 12 2 ज़ा 24 किलोमीटर per hour. Is that clear? I hope this is clear to you all. Please keep on solving more and more questions. The things will become clearer to you all. Thank you.